Hi everyone. Can you guys turn your mic on so that is it So for now, they can send reactions. Is that fine? Or you need everyone to speak? no, that's fine. I just wanted to get to know whether their mic is on or not. Uh, Currently, the mics are not on. Yeah, all right. So we'll just start the session. Guys, you all can send reactions whenever needed. Right. So uh, today will be Python day one. We will be having near about 10 days for basics of Python that we are going to do. So day one, day two onwards till the day 10, we will be learning Python only, right? And once the Python is set, we'll go to the advanced part. We'll go to the advanced part of Python, where again it will take near about same 10 days to complete the Python, advanced Python. And after this, we'll start with the machine learning part, right? So again, there would be 5 to 6 days for machine learning. This will be our roadmap, right? Now, I hope everybody has logged in through their system by using laptop or hope you're using computer. Now, what you can do is you will see how to install the Anaconda, which is required for our Python, right? So, what you can do is you can go to the any browser out there and you can write down over here Anaconda free download. Just write down this thing. Write down Anaconda free download. If you write down Anaconda free download, it will take you through this pages out there. You can click on any page out there. Let's say first page जो है वो open कर रहा हूँ मैं. So you don't have to log in basically. This is not the case. If I scroll down, all right. Mhm. You can select this thing, download. Yes, yes, yes. Right. So any link you can open. First link, suppose I am just interested to open this first link. I can see free download over here, right? If I click on free download, all right, it is asking for email ID. If you go to skip registration, then also this is, you do not have to log in over there. Just keep that registration and select this download based on the operating system that you are using. Suppose if you are using Windows, you can select this download link. If you select, if you are using Mac OS, so you should select this download links that you have.
Click over here, it will redirect you towards the downloading part, and it's 904 MB, so it will take time, right? It's near about 1 GB. So depending upon your computer system or depending upon your uh, network speed, it will take time. So you just download this and let me know if it is done or not. Is it clear for everyone? Yes, Gaurav, Vinay, Bakshish, Aditya, Abhay, Ganesh, Gautam, Harimohan, Harsh, Kajal, Kamal, Mehak, Naman, Shubham, Tanuj, Vaibhav, Vinay, Zishan. Is it clear? Just download that. Let me know if it is done or not. I'll help you out to download this then. No, you cannot download it in smartphone. Don't use smartphone. If you have laptop, it is recommended for you to use laptop because this will be your live session, right? Practical session. So if you have laptop, just use that. Don't use mobile phone for this.
Is it done, guys? Right? Is it done? All right. Anyone can share your screen. I'll help you out how to install the Anaconda in your system. Would you able to share your screen? Is it on for you? I don't think so, sir. Wait, I'll give them access. Now, are you all able to share your screen? Yes, guys. Can you see? Can you see there is one presentation option in your screen? Yes, Naman. You all can speak also. Like, you, you all can unmute and speak. Anyone can share your screen. I'll just help you out how to install that. It's already installed in my system. That's the reason I am not able to explain you how to install that. Yes, Gaurav, Vinay, Aman. Share screen is turned off by host. Mac, can you see this? They are saying Yeah. it's turned Uh, off by host. just a second. Guys, try doing it now. I think it's on. You can share your screen. Yes, Vinay. Still not working for me. Still not. Just try it one more time. Who want to share? Please, once write your name. Bakshish. Please check your. You can share. Please check once. Bakshish, do it. Right now, um, go to the next. Yes, click on I agree. Go next. No, no, just me only. Don't do anything. I'll just help you out for each and every step out there. Yes, go next. Go next. Install. Don't select that. सब सब जो स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊंगा. Don't do anything over there.
Yes, everyone, you have to do this thing. Yeah, now go to the next. Finish this. Finish, finish, finish. Now search
वो सर्च है ना वहाँ पे, just a minute, it is initializing. This is open now. Close this thing. Close this. Scroll down. Scroll down. देखो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक है, राइट? जुपिटर लैब नहीं, जुपिटर नोटबुक. We have two notebooks under the name of Jupyter. No, don't show again करो इसको. Scroll down. तो ये सारा इंस्टॉल नहीं करना आपको. सी जुपिटर लैब क्या है? व्हाट इज जुपिटर लैब? An extensive environment for interactive reproducible computing based on the Jupyter notebook and architecture. So ये जो है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है. सपोज आपको एडिट करना है, आपको साइमल्टेनियसली काम करना है उसके ऊपर ग्रुप में, तो वो जुपिटर लैब यूज करते हैं. विल यूज जुपिटर नोटबुक. So click on launch, it will open the notebook. Otherwise यहाँ पे भी select an app, right. Chrome select करो यहाँ पे. It will open this. This is your notebook. Now I'll just help you out कि इसमें क्या करना है. There is another method how to open this thing. Now search जो है नीचे, search. Can you see search? यहाँ पे search करो Jupyter notebook. Now open this. तो ये इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, राइट? अभी ये जो ब्लैक स्क्रीन जो है ये आपको क्लोज नहीं करना अनलेस एंड अनटिल आपको जुपिटर नोटबुक बंद करना है पूरा. तो इसको सिर्फ मिनिमाइज करने का है अपने को. यू जस्ट हैव टू मिनिमाइज दिस. डोंट क्लोज दिस थिंग. इसको मिनिमाइज करो. नाउ दिस इज ओपन, राइट? अभी just let me know if it is done for everyone so that we can start with the next part. Is it done? Mahavir is having question. What about other guys? Abhay, just let me know in the chat or just let me know in the comment or reaction से भी आप बता सकते हैं. Is it done for everyone? Mahavir Verma is having doubt. Yes, you can unmute and you can share your screen. Yes, Mahavir. You can stop presenting, Bakshish. So now we have to create a new notebook. I'll just help you out what we have to do. Just don't worry. I'm just waiting for the queries that you have with this. If this is done, everyone is good with this? All right, so I'll just move further with the next part. Now, what you have to do is just open the Jupyter notebook that you have just now installed, right? And just minimize this, don't close this. It will open the Jupyter notebook over here. This is your Jupyter notebook. Create new folder under the name of data science. So data science के नाम के आप एक folder बनाओ. How you can do is click on new, then new folder. यहाँ पे एक untitled folder क्रिएट हुआ है जो कि few seconds ago क्रिएट हुआ है, right?
इसको रीनेम करना है आपको, सपोज सो यू कैन सिलेक्ट दिस, ऊपर जाके यू कैन रीनेम दिस एंड राइट डाउन data science, right? Just write down this, click on rename, it will open the new notebook. Now if you open data science, इसमें भी आपको एक नया फोल्डर बनाना है. So how to create new folder? I'll select new folder, untitled folder को I want to rename this. Let's rename it as Vidun Learnify. So ये Vidun Learnify में will be having everything. So I'll just create another new folder. I'll rename this as Python. I'll get new folder. I'm gonna rename this as machine learning. तो Python में जो भी होगा, that will be over here. Suppose I'm creating new another folder inside my Python folder. Here it will be Python या फिर day one, right? And day one में आप सब इधर जो भी आप करने वाले हो, that we will do it over here. देखो आप अगर ऐसा फॉलो करोगे तो आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बहुत सारे नोटबुक रहने वाले, राइट? तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. देखो इट्स वेरी इजी, राइट? पाइथन, तो पाइथन में जो है वो देन यहाँ पे मशीन लर्निंग में we have done this thing as a, it will be there, right? So I'll recommend, it's very good habit to create separate folder for each and everything. Now day one may I'll just create new notebook. How to create new notebook? I'll go to the new Python 3 over here. And we'll now study this thing. ये जो interface है Jupyter notebook का, we will study that. Now see what we'll do is we will create rename this thing. So let's say day one is the name that we have. अभी मुझे suppose कुछ लिखना है यहाँ पे, तो you can click over here. Let's write down hello everyone, welcome to day one. So I have printed this particular thing, right? Just try this. Is it done, guys?
Are you caught up? So now we have to create new notebook. Select kernel. Which one? Select kernel. Where is the select kernel option? Yes, Kamal. Now see over here. We'll see the next part. Suppose आपको ये सेल के नीचे सेल ऐड करना है. Very first thing is how to run this sale. So we have shift plus enter to run the cell. Shift और enter अगर आप simultaneously press करोगे तो it will run the cell. Suppose if I write print day 1 and if I press shift and enter, it will run the cell, right? Now we'll see few shortcuts that we have. अभी यहाँ पे देखो, suppose if I click over here, ये region में ये जो सेल है पूरा, इसके अंदर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो the color over here is green, right? If I click over here, the color is blue, right? This is green, this is blue. So in order to use shortcuts, अगर आपको shortcut use करना है तो ये color blue ही चाहिए. Green अगर रहेगा तो you cannot use shortcuts because it's in edit mode, right? So click anywhere over here outside the cell, change this color to blue, and if I press A for above, तो ये जो सेल है इसके ऊपर मैं एक सेल ऐड कर रहा हूँ. सपोज ये सेल नंबर 4 है, इसके ऊपर मुझे सेल ऐड करना है. तो शॉर्टकट क्या है? प्रेस बटन A फॉर अबाउ, A फॉर एप्पल. तो इफ आई प्रेस A, ये सेल के ऊपर एक सेल ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट? तो शॉर्टकट इज A फॉर अबाउ, B फॉर बिलो. इफ आई क्लिक ओवर हियर एंड इफ आई प्रेस B, तो A फॉर टू ऐड सेल above to the cell, B is to add cell below to this cell. Is it clear? Below to the cell. अगर ये clear है तो we'll go with the next part. Now we'll see basic shortcuts which are necessary. We are going to see the shortcuts which are necessary for this thing. So A, B is your shortcut. Suppose आपको ये cell delete करना है. Suppose ये जो cell है मुझे delete करना है. I can click anywhere over here, press double D to delete the cell. So double D is to delete the cell, right? Then we have another shortcut. Can you see this code? This cell has, इसका nature क्या है? Cell का type क्या है? It is code, right? Now if I change this to markdown, तो मैं यहाँ पे heading डाल सकता हूँ. Heading for this particular thing. So heading, if I run this shift enter, ये हो गया heading, right? मेरा. और इसके पीछे बाद में अगर मुझे कुछ लिखना है तो I can write this thing. So how to change this to markdown is you can select this code to markdown, or we have one shortcut. If you click over here and press M, अगर ये color blue है, if you press M for markdown, so it will change this to markdown. Can you see this? अभी इसका nature क्या है? इसका nature है code. Now see over here, यहाँ पे देखो, if I press M, it will change this to markdown, right? See, I'm pressing M over there, it is changing to markdown. So M is for markdown shortcut and
Markdown is nothing but to add heading. Now अगर मैं markdown इसको कर रहा हूँ, अगर मैं single hash यूज कर रहा हूँ, this is your heading 1 or heading level 1, right? Then what do you have is just a minute. Heading level 1. If I run this, then we have heading level 2. If I use level 2 hashtag, अगर 2 hash यूज कर रहा हो तो it is your heading level 2. If I use 3 hash, it is your heading level 3. And if I use 4 hash, 1 2 3 4, it is your heading level 4. तो ये डिक्रीज हो रहा है, राइट? फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रहा है. And if I use 5 hash, 1 2 3 4 5, it will be italic, heading level 5. ये क्या है? ये italic font है. Is it clear for everyone? Is it clear? So we'll go to the next part, which is your तो ये सब बेसिक्स है और बहुत सारे शॉर्टकट्स है, बट वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. सी, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, देन वी हैव आई ओ shortcuts, H shortcuts, then A B, we already have seen this, shift L, X C V D, but जो important है वही अब we can study. Now one more thing is, अगर सपोज आपके सिस्टम में ये नंबर जो है 1 2 3, ये नंबर नहीं दिख रहा है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर आप व्यू में जाओगे, व्यू, एंड इफ यू गो टू द टॉगल लाइन नंबर्स, तो ऐसा रहेगा बाय डिफॉल्ट, आपके इसमें नंबर नहीं रहेगी, राइट? सो गो टू व्यू एंड जस्ट दिस ऑप्शन टॉगल लाइन नंबर्स. तो 1 2 3 4 आपको लाइन नंबर मिल रहा है वहां पे, राइट? तो दिस इज नॉन एज टॉगल लाइन नंबर. तो ये इसका काम क्या है? अगर आप कोड में, अगर कोड लिखने में आप एरर कर रहे हो, तो वहां पे आपको समझेगा कि लाइन नंबर 3 में एरर है, लाइन नंबर 2 में एरर है, ऐसा. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी ऑलरेडी हैव स्टडीड द बेसिक पार्ट, हाउ टू प्रिंट एनीथिंग. आपके पास दो अल्टरनेटिव है, प्रिंट एंड लेट्स से हाय एवरीवन, लेट्स लर्न पाइथन, शिफ्ट एंटर, ये भी सेम है. और इफ आई राइट डाउन दिस थिंग, हाय everyone, let's learn Python. This is also same, right? तो सिंगल कोट या डबल कोट में आप लिख सकते हो to print this. Either single quotes या डबल कोट्स, या फिर यूज प्रिंट फंक्शन. Now, why Python is used for data science? देखो, अगर आप सी प्रोग्राम देखोगे, सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, पाइथन में जस्ट लाइक कैलकुलेटर, अगर आपको ये नंबर ऐड करना है 1 2 3 प्लस 1 3 2, आपको डायरेक्टली उसका एडिशन मिल जाए. बट सी प्रोग्राम देखो कैसा है, टू ऐड टू नंबर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग, देन ओनली इट विल वर्क. टू ऐड टू नंबर्स आपका सी प्रोग्राम है, दिस इज योर सी प्रोग्राम, राइट? बट व्हाट इज द पाइथन?
Python is just like this: 145 plus 167. So ये basic है. Just like you can use it like Python, you can use your Python like calculator over there. Now these are the few questions that I generally give as a part of your homework, day one homework. सबको देता हूँ मैं basically. So first is why Python is used for data science. Second is what are the key features of Python. Third है आपका what is Pep 8. Fourth question is what are the applications and advantages of Python. What are the applications and advantages of Python? Right? So ये questions आप note करो या फिर आप इसका screenshot भी ले सकते हो. Can do anything. Just search these questions on Google like this. Tomorrow we'll discuss the answer. Right? So this is just for your day one. Now we'll go to next part, which is let's rename this as operators. So what are the operators in Python? What are the operators that you have in Python? So Python operators क्या है? They are used for performing mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, and division. They are used for performing mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, and division. So let us study the first type of operator, which is your arithmetic operator. What are the arithmetic operators that you have? Let us take a photo for this. देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. So you can take a photo for this. And you can paste it over here. So these are the operators that we have that we are going to study. So let's say अगर मैं लिख रहा हूँ a is equal to 56 and b is equal to 34. What I'm doing is I'm writing a is equal to 56, b is equal to 34. And if I write a plus b, I'm getting 90 over there, right? Just like adding these two numbers. Now if I write a minus b, it will be 22. 56 minus 34.
32, right? If I write A into B, so 56 into 34 हो रहा है यहाँ वहाँ पे. And if I write A divided by B, so this is your division, right? So addition, subtraction, multiplication, and division over here. The next thing that you have is, we have, suppose if I write capital A plus small b, capital A plus small b, can I get answer over here? If I run this, I'm not getting the answer. What is this error? What is this error? It is showing us as A is not defined, right? मतलब वहां पे your Python will treat capital A and small a as different. कैपिटल ए और स्मॉल ए डिफरेंट है. तो ये जो कैपिटल ए है एंड ये स्मॉल ए है, दिस इज डिफरेंट. सपोज लेट्स से, लेट्स टेक Atul. So if I write capital Atul is equal to 1, 2, 3, 4, right? And if I just write print, or if I write print small Atul, it is it is the error is throwing as, it is throwing error as name Atul is not defined, और name capital A is not defined. मतलब आपने ये जो small Atul है, ऐसा आपने define ही नहीं किया कुछ. You have not defined anything under the name of small Atul, right? Now if I print capital ATUL, I'll be getting the answer, right? Yes or no? So if I define small Atul is equal to 1, 2, 3, 4 now, and if I print small Atul, it will be there, obviously. So इसको बोलते हैं case sensitivity. Your Python will treat capital A and small a as different. What this is known as? This is known as case sensitivity. So Python is your case sensitive model. This is your case sensitive model. Are you understanding this? So Python is your case sensitive language. Capital A and small a is different, right? Now suppose if I define A is equal to 2, B is equal to 3. If I write A double star B, the answer is 8 over there. What is this 8? Can anybody explain this? ये 8 क्यों आ रहा है वहां पे? Yes, why 8 is there? Power operator, right? So ये हो गया आपका 2 raised to 3. If I write B is equal to 4, so it will be 2 raised to 4. If I write B is equal to 5, it will be 2 raised to 5. If I write 2B is equal to 2, it will be 2 raised to 2, right? So this is just a power exponent operator. Now if this is done, we'll go to the next operator, which is comparison operators. If I write 5 greater than 7, 5 is greater than 7, obviously it is not. So वहाँ पे output क्या आ रहा है? False. If I write 7 less than 5,
7 5 से कम है क्या? No, obviously it is false. If I write 5 less than 7, then output is true. If I write 8 greater than 5, your output is true. Is it clear? So this is a comparison operator. It is used to compare the two numbers. If I write 7 is equal to 5, then it is false. If I write 5 is equal to 5, it is true, right? Not equals to कैसे लिखना है? A 8 is not equals to 5. This is your not equals to operator, right? If I write 7 greater than or equal to 7, तो वहां पे ट्रू आ रहा है. इसका मतलब क्या है? 8 not equals to 5. This is your not equals to, ये जो साइन है ना, ये साइन, दिस इज योर नॉट इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू. अभी ये क्यों ट्रू आ रहा है? बिकॉज वी हैव टू कंडीशन. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? वो है 7 ग्रेटर देन 7. ये फॉल्स है ऑब्वियसली. सेकंड कंडीशन क्या है? 7 इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज ट्रू, right? Oh, this is true, this is false. This is also true. Now if I write 7 greater than or equals to 9, तो false आ रहा है. What is this? First condition is 7 greater than 9. Sorry, first condition, let's say 7 is 9. ये false है. Second condition क्या है? 7 greater than 9. So this is also false. दोनों false है, इसलिए false आ रहा है. यहाँ पे एक false है, एक true है, तो output is true over there. Is it fine? Is it clear, guys? So this is just the basic part. ये अपन क्या कर रहे हैं? अपन Python basic से start कर रहे हैं. इसलिए there would be, I mean ये basic रहेगा और you'll find this boring little bit. But once we have developed the foundation, we can see the advanced part over there. देखो, अगर foundation is clear, then we can move further with the advanced part. I'm just trying to open this. So this is your advanced part. तो ये करने के लिए आपको, in order to understand this, we have to see what is this list, what is this operator, right? That's the reason we are just trying to understand the operators. Now if this is done, we'll go to the third part, which is logical operator, logical operators. And what are these? They are used to perform logical and
or logical not operations. They are used to perform logical and logical not operations. Now, what is this logical and logical not? We'll try to study this, but before that, let us take a photo for this. Logical operators in Python. See, these are the logical operators and or. These are the logical operators that you have over here, right? So and or not. Now we'll try to study this and or not. Suppose मैं A में स्टोर कर रहा हूँ ट्रू वैल्यू, B में स्टोर कर रहा हूँ फॉल्स. अभी देखो यहाँ पे जो ट्रू अगर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल टी तो वो ग्रीन कलर में शो कर रहा है, राइट? इफ आई राइट डाउन स्मॉल ट्रू तो वो मतलब ये जो ट्रू और फॉल्स है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए तभी वो आपको लेगा. दैट इज ऑल्सो important. If I write a is equal to true, so this will not work. True is not defined, right? तो आपके पाइथन में ट्रू ऐसा डिफाइन किया उन्होंने, कैपिटल टी और कैपिटल एफ. नाउ इफ आई राइट ए एंड बी तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? मुझे आउटपुट मिल रहा है फॉल्स. व्हाई फॉल्स इज देयर? बिकॉज इफ आई राइट ट्रू एंड फॉल्स द आउटपुट इज फॉल्स, राइट? सो इसका मीनिंग क्या है? ये जो एंड ऑपरेटर है वो ट्रू कब देगा? इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तभी वो ट्रू देगा. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है या फिर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो इट विल नॉट गिव ट्रू. सो सपोज लेट्स सी ट्रू एंड ट्रू, इसका आउटपुट ट्रू रहेगा. बाकी सारा जो है ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, उसका आउटपुट क्या रहेगा? फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स. सिर्फ ट्रू और ट्रू का आउटपुट ट्रू है, बाकी सारा इसका आउटपुट फॉल्स है. कैन यू सी दिस? तो ये एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है वो ट्रू कब देगा? सिर्फ दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी वो ट्रू देगा. बट और का ऐसा नहीं है. और जो है वो और जो है और ऑपरेटर ये जो है ये देखो ट्रू और फॉल्स, इसको भी ट्रू देगा. फॉल्स और ट्रू, इसको भी ट्रू देगा. ट्रू और ट्रू को तो ऑब्वियसली ट्रू देगा ही वो, बट फॉल्स और फॉल्स को सिर्फ फॉल्स देगा. तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज दैट? और रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर दोनों में से एक सेंटेंस भी ट्रू रहेगा तो भी वो आउटपुट देगा.
Is it clear, guys? And then or is it clear? Yes, what about other guys? तो देखो एंड क्या है, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो भी तो ही वो ट्रू देगा, बट और क्या है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड नॉट क्या करता है, नॉट अपोजिट करता है, मतलब अगर आप लिखोगे नॉट फॉल्स एंड फॉल्स, इसका आउटपुट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, क्योंकि फॉल्स एंड फॉल्स का आउटपुट क्या है, फॉल्स एंड फॉल्स का आउटपुट फॉल्स है। इसको अपन रिवर्स कर रहे हैं नॉट से। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इट रिवर्स द डिसीजन। नॉट operator, what it does is it reverse the output. So if I write not true, ये false देगा, right? If I write not false, ये true देगा, ऐसा। Is it clear now? Now next is your assignment operator. Assignment operators. What does this do is they are used to assign values to variables. Variables को values assign करते हैं, जैसे different assignment operators are is equal to, plus is equal to, minus is equal to, divided by is equal to, into is equal to, and ये क्या है, percentage. We are also going to study this, right? So if I write a is equal to 10, if I write b is equal to 20, तो मैंने क्या किया, a को असाइन किया वैल्यू 10 और b को असाइन किया 20, और अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ b प्लस इक्वल्स टू a, b प्लस इक्वल्स टू a। तो वो क्या दे रहा है, अगर मैं b का वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो अभी b का वैल्यू 30 है। तो ये जो लाइन नंबर 54 है, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस नाउ। इसमें क्या किया है, b इज इक्वल टू b प्लस a किया इसमें, मतलब b इज इक्वल टू, b में क्या था पहले, इट वाज 20, प्लस a में क्या है, इट इज 10। सो b को असाइन क्या है, b इज इक्वल टू b प्लस a, b इज इक्वल टू 20 प्लस 30 विच इज 20 प्लस 10 विच इज 30, राइट? तो आपको b का वैल्यू 30 मिल रहा है, राइट? ना फ्रेश वैल्यू क्या है b का, अल्दो अपने b का वैल्यू 20 डिफाइन किया है, बट फ्रेश वैल्यू क्या है, इफ आई रन दिस, व्हाट इज माय b, व्हाट इज देयर इन माय b, 30 इज देयर, राइट? तो b अगर 20 डिफाइन किया है तो भी वो फ्रेश वैल्यू कंसीडर करते हैं, जो कि है लाइन नंबर 56 में और लाइन नंबर 54 में। नाउ इफ आई राइट b इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू a, इफ आई राइट दिस, और अभी b चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 20। तो इसने क्या किया है, अभी b में वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू b माइनस a। b का वैल्यू क्या है अभी, 30, a का वैल्यू क्या है, 10, 30 माइनस 10 इज 20 ऑब्वियसली, और मैंने फिर से रन किया तो अभी 10 मिल रहा है। इज इट क्लियर नाउ? Yes guys, is it fine, is it clear?
So this is what we have now. अगर मैं लिख रहा हूँ c माइनस इज इक्वल टू a, तो वो नहीं आंसर नहीं देगा क्योंकि मैंने c डिफाइन ही नहीं किया, राइट? नाउ इफ आई राइट b डिवाइड बाय, अभी b में चेक करो क्या है, b में 20 है और a में क्या है, a में 10 है। तो इफ आई राइट b डिवाइड बाय इक्वल्स टू a, ये क्या करेगा, b का आंसर होगा 2। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। सो वैल्यू क्या रहेगा, 20 डिवाइड बाय 10, राइट? नाउ विल सी वन मोर ऑपरेटर व्हिच इज नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर। वो भी कैसा है, दिस ऑपरेटर पाइथन। अगर आप नॉर्मल डिवीजन देखोगे, डिवीजन सो दिस इज योर डिवाइजर, ये है कोशेंट, ये है डिविडेंड और ये है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है, अगर मैं 75 को 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर आ रहा है 3, राइट? तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो, इफ आई राइट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, and if I write a percentage is equal to b, तो वो क्या कर रहा है, a का वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। व्हाट इज दिस, या फिर मैं ऐसा लिखूं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, a परसेंटेज इज इक्वल टू b। a का वैल्यू 1 दे रहा है, क्यों? बिकॉज मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करूं, 5 को 2 से डिवाइड करूं, तो मुझे रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 5 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 2 2 is 4, 5 minus 4 is 1, right? So your reminder, रिमाइंडर क्या है, 1। सो वो आउटपुट 1 दे रहा है। देखो, अभी मैं यहाँ पे 3 लिखूं, सपोज इफ आई राइट 5 डिवाइड बाय 3, a परसेंटेज b एंड a, तो अभी रिमाइंडर क्या है, अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं, 3 5 3 1 जा 3, 2, राइट? व्हाट इज योर रिमाइंडर, it is 2, right? So you are getting 2 as the answer. If you have not understood this, I'll do it one more time. If I write a is equal to 30 this time, b is equal to 2, अगर मैं 30 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा कुछ रिमाइंडर बच रहा है वहां पे, ऑब्वियसली नो, दिस इज 0। 30 को 2 से डिवाइड करो आप, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 30 है, तो फुल डिवीजन है ना ये, 15 2 जा 30 होता है ना, तो रिमाइंडर क्या है, इट इज 0। नाउ लेट अस टेक a is equal to 30, b is equal to 4, and a percentage b is equal to b, a is equal to क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। कैसे, मैं 4 और 30 इसका कर रहा हूँ। इफ आई डिवाइड 30 by 4, it will be 4 7 28,
And what is a reminder? What is a reminder? It is 2. So अगर मैं 30 और 4 का कर रहा हूँ तो मुझे रिमाइंडर 2 मिल रहा है. तो ये परसेंटेज जो है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस साइन. और ये क्या करता है? ये आपको रिमाइंडर देता है हमेशा. I'll just take the photo over here. Stores the reminder obtained when dividing A by B, right? If I write this thing, it will give us this thing. Is it clear, guys? Now, so this is what we have for the operators. Let me know if it is clear or not, everyone. Abhay, Atul, Hani, Bakshish, Dhruv, Gautam, Harimohan, Harsh, Ujjwal, Japuji, Kajal, Naman, Piyanshu, Prashant, Rakesh, Tanuj, Vaibhav, Vinay. Is it clear? It's 12:23 now. We'll have a break till 12:33, and after the break, we are going to start the data structures. In that, we'll study the list. Right? Let's have a break for 10 minutes.
Now we'll just try to understand what are the different data structures that we have, or what do you mean by data structures in Python? It's a way of organizing data so that it can be accessed more efficiently depending upon the situation. Data structures are fundamentals of any programming language around which a program is built. And Python helps to learn the fundamentals of these data structures in a simpler way as compared to other programming languages. Right? So these are the data structures. So let us take this definition and let us try to add it over here. Data structures. Now, first data structure that you have is a list. So list ka bhi definition we can take in from this website. It's very easy. It's just like you should know the definition. That's the reason we are taking it. Mm. You can take this. And you can paste it over here. Since the items are ordered, changeable, and allow duplicate values, are indexed. First item has index 0, second item has index 1. Now, what do you mean by this? We'll try to understand. Let's try to create a list over here. So suppose my list 1 or list is, if you have to define list, आपको square bracket open करके ही करना होता है. This is your list. If you write down something in square bracket, that it will treat as, your Python will treat as a list. Now let us create a list of the students, few students that we have: Vinay, Bakshish, Naman. We have Abhay, Atul, Bakshish, Dhruv, Gautam. Let's say Abhay, Atul. Right? You can use double quotes like this, or you can use single quotes. But if you don't use quotes, it will not treat as a text. अगर आप ऐसे लिख रहे हो, Ajay, like this, it will throw the error because Ajay is not defined. तो अगर आपको text use करना है तो आपको quote के साथ देना होगा, like this, right? Now if I write down list, list में क्या है? These are the elements that I have. Now in your Python, remember this thing, you're counting in very simple words. Your counting starts from 0, not 1. का मतलब क्या है? ये जो अभय है, इसका काउंट क्या रहेगा? इसका इंडेक्स क्या रहेगा? 0. इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ये अतुल है, इसका इंडेक्स रहेगा 1, बख्शिश का इंडेक्स रहेगा 2, सिमिलरली गौतम का इंडेक्स रहेगा 3 और अजय का रहेगा 4. सो मैं अगर लिखूंगा लिस्ट का 0th एलिमेंट, तो वो रहेगा अभय. इवन दो इट्स फर्स्ट एलिमेंट, बट उसका इंडेक्स क्या है? 0. सो योर इंडेक्स स्टार्ट्स index in Python starts from 0. Your index in Python starts from 0, not 1. Right? So if I write list 1, तो मुझे मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट, मतलब सेकेंड एलिमेंट बेसिकली, जिसका इंडेक्स है 1. तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है. इज इट क्लियर? So you can take this figure to understand what I'm trying to explain. You can take this image and paste it over here. Index 0, 1, 2, 3. Is it clear?
What do you mean by index? Is it clear? So this is also very important part. Suppose I am creating another list, list 2. हाँ, one more thing, आप ऐसे स्पेस नहीं दे सकते हो. स्पेस इज नॉट अ वैलिड सिंटैक्स. अगर आपको ऐसा लिखना है तो you can use underscore for that reason. Means what I'm trying to say is, if I write Python day 2 is equal to this list A B C D E F, suppose this list. So ये syntax valid नहीं, so space is not allowed in your variable, but you can create this. अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप अंडरस्कोर डाल के लिख सकते हो, right? So space is not allowed, remember this. Let's say list 2 is equal to India, US, Germany, let's take UK, and let's take Spain, right? Now if I write down list 2, I'll be getting this thing. This is my list. Now you can ask कि list में आप यही element डाल सकते हो क्या? So you can add any elements. Let's say A is equal to मैं number लिख रहा हूँ 12. इसका type check कर रहा हूँ A का, तो type क्या है? Integer, right? If I write A is equal to 1.24, मैं इसका type check कर रहा हूँ. B is equal to 1.24. अगर मैं B का type check कर रहा हूँ तो it is float. It is float. Let's say C is equal to quotes में लिख रहा हूँ India, and I'm checking the type of C. What is this type? It is string. So we have integer data type, float, string. Let's say D is equal to true लिख रहा हूँ, capital T. And if I'm checking type of D, तो type क्या है? Boolean. Boolean, string, and integer. Right? One more thing, if you know complex number, do you know complex number in mathematics? Do you know complex number? Yes. So complex number भी एक डेटा टाइप है आपके पाइथन में. वो भी आप कैसे लिख सकते हो? You have this thing. If I write f is equal to a plus या फिर 2 plus 3i, it will not take. But if I write 2 plus 3j, it will take this. So if I write type, तो ये जो i है ना, imaginary part, यहाँ पे पाइथन में j रिप्रेजेंट करता है imaginary part. And if I write type of j, it will be, so not j, type of f. This f, it is complex number. So ये सारे data types है, integer, float, string, boolean and complex number. Now you can ask this question कि मैं string list में सिर्फ string ही डाल सकता हूँ क्या? So it is not like that. You can add any value. Suppose any data type you can add. List 3 is equal to number, integer, float, 3j plus 4, complex number, string. देखो सब डाल रहा हूँ मैं, सब डेटा टाइप. ये इंटीजर है, ये है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज स्ट्रिंग एंड दिस इज boolean value, right? True, false. Now if I check what is there in list 3, तो सब एलिमेंट्स है. So list is flexible. List is your flexible data structure which can have elements of different data types. Is it clear? What do you mean by flexible?
Yes guys, is it clear? तो इसमें फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब यू कैन ऐड एनी डेटा type, any elements over there in your list. Now let's create another list जिसके inside में list डालते हैं. Suppose list 4 is your list. इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, let's add few elements 1, 2, 3.4, इसमें और एक list डाल रहे हैं. Suppose इसमें रहेगा ABC, orange, kiwi, banana, right? नाउ अगर मैं लिख रहा हूँ लिस्ट 4 का 0th एलिमेंट वो क्या है 1, लिस्ट 4 का फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है 2, थर्ड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है 3.4 एंड लिस्ट 4 का थर्ड एलिमेंट क्या है, ये लिस्ट. तो ये लिस्ट का मुझे सपोज फर्स्ट एलिमेंट लेना है, लिस्ट के अंदर का जो लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं 0 लिखूंगा. मुझे ये लिस्ट 4 का थर्ड एलिमेंट क्या है आपका लिस्ट, राइट? उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इट इज ABC. Similarly, if you write list 4 थर्ड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट मतलब इंडेक्स 1, तो 0 इंडेक्स चालू होता है, ये इंडेक्स नंबर 0, ये है इंडेक्स नंबर 1, ये है इंडेक्स नंबर 2, ये है इंडेक्स नंबर 3, राइट? नाउ लिस्ट 4 का थर्ड एलिमेंट दैट इज बनाना. सो यू कैन फेच लाइक दिस, लिस्ट के अंदर लिस्ट. इज इट क्लियर? So we have seen how to access list element like this, how to change list items. Right, this is also can be done over here. Let's say list 4 जो है list 4, उसमें आपको list 4 का फर्स्ट एलिमेंट है वो चेंज करके आपको इंडिया लिखना है. नाउ अगर आप देखोगे लिस्ट 4 में क्या है, तो आपने ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 1 था उस वो इंडेक्स चेंज किया. सो यू कैन चेंज द आइटम वैल्यूज लाइक दिस, ऐसा आप चेंज कर सकते हो. Then add list items. How you can add is we have append function. We'll study that. So let us take this thing. Let us try to understand the append function. What is append? List 4 में क्या है आपका? This is your list 4. If I write list 4 dot append, मुझे क्या करना है? Suppose मुझे ऐड करना है ऑस्ट्रेलिया, ये एलिमेंट ऐड करना है. Now if you check list 4, तो by default append function क्या करता है? By default आपके end में ऐड करता है. So append what it does to add an element to the end of the list. Use append method. So what does append function do? It will add elements at the end of the list. It will add elements at the end of the list. Is it clear? Is it clear? Append. This is your list. You're adding this element which is already added to the end. Yes, guys. Do you have any questions in this?
Now append के बाद में we'll see what do we have is to remove the elements. ये insert भी एक मेथड है जिससे आप insert कर सकते हो जहाँ पे आपको insert करना है. Suppose let us take this thing. देखो suppose ये आपकी लिस्ट है, this list, right? तो this list में क्या है आपका, ये एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 1 पे. क्या इंसर्ट करना है, ऑरेंज इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 1 पे. सो व्हाट डू यू हैव एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी. कहाँ पे, एट इंडेक्स नंबर 1. तो इंडेक्स नंबर 0 पे एप्पल था, 1 पे बनाना था एंड 2 पे चेरी था. आपने ऐड किया इंडेक्स नंबर 1 पे, तो इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड हुआ है. अपेंड क्या करता है, अपेंड बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड करता है, राइट? बट इंसर्ट विल ऐड जहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो. So this is your insert method in a list. Right? So let us give heading as insert method in a list. Let us try to add this. Is it clear? वैसे ही आपके पास extend भी है, 2 लिस्ट आप extend कर सकते हो. This is also not that difficult. So we'll try to study this thing as well. Let us take this. Let us give heading as extend. Extend to append elements from another list to the current list. तो देखो आपके पास 2 लिस्ट है. You have 2 लिस्ट. एक लिस्ट में क्या है, दिस लिस्ट में क्या है, एप्पल, बनाना, चेरी. ट्रॉपिकल लिस्ट में मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया है. एंड इफ यू राइट डाउन दिस लिस्ट, मतलब ये जो दिस लिस्ट है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ABC और DEF. या DEF, राइट? नाउ व्हाट यू वांट टू डू, ABC के अंदर एक्सटेंड करना है क्या, DEF लिस्ट. तो देखो एप्पल, बनाना, चेरी, उसके अंदर ही आप मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया लिख रहे. एंड इफ आई राइट abc डॉट append def, तो ये क्या करेगा, कैन यू सी द डिफरेंस ना? append क्या करता है, लिस्ट के अंदर डायरेक्टली लिस्ट ऐड करता है, बट आपको लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करना है. सिर्फ ये लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट्स ऐड करना है. तो यू कैन यूज एक्सटेंड. व्हाट डज append डू, ये एक लिस्ट है, उसके अंदर और एक लिस्ट ऐड किया है, देखो, राइट? डायरेक्ट लिस्ट जो है वैसे ऐड किया है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में. बट एक्सटेंड व्हाट इट डज, इट जस्ट एड्स एलिमेंट टू दिस लिस्ट. तो लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड नहीं कर रहा है, लिस्ट के अंदर सिर्फ एलिमेंट्स ऐड कर रहा है. Now how to remove any elements in your list, this is also you can do it by using remove function. Remove function in list. तो remove function क्या है, it's just like this. सपोज आप 2 लिस्ट बना रहे हो, या फिर एक लिस्ट है आपकी, this list is apple, banana, cherry, right? And if you write this list dot remove, क्या रिमूव करना है आपको, बनाना रिमूव करना है. So this list dot remove banana and print this list. If you run this, you'll be getting this thing.
तो बनाना जो है, you have removed that. So remove function is to remove this list. Pop function भी है आपके पास to remove specific index. मतलब आपको suppose let's take this pop method. Suppose this is your list, right? You write this list dot pop. तो by default क्या करता है pop? Last element remove करता है by default. By default it will remove the last element. जस्ट लाइक अपेंड में क्या करते हो आप? अपेंड बाय डिफॉल्ट लास्ट में एलिमेंट ऐड करते हैं, राइट? तो पॉप बाय डिफॉल्ट लास्ट का एलिमेंट रिमूव करता है. बट अगर आप इंडेक्स स्पेसिफाई करोगे, जस्ट लाइक दिस, इफ यू स्पेसिफाई द इंडेक्स, मतलब दिस लिस्ट में एप्पल बनाना चेरी है, दिस लिस्ट का 0 इंडेक्स नंबर क्या है? एप्पल. इंडेक्स नंबर 1 में क्या है? बनाना. इंडेक्स नंबर 2 में क्या है? चेरी. नाउ इफ यू राइट डाउन दिस लिस्ट डॉट पॉप 1, आपको क्या करना है? आपको इंडेक्स नंबर 1 जो है वो रिमूव करना है. इंडेक्स नंबर 1. So if you run this, apple cherry is there, but index 1 क्या है? banana. तो वो by default remove हुआ है because you have specified the index number 1 over there, right? If you do not specify the index, pop removes the last item. ये भी अपन ने देखा है. एक delete भी keyword है to remove the specified index. तो delete is like this. अगर आप लिख रहे हो delete, आपको क्या करना है? this list का 0th element, वो क्या है? That is apple. So if you run this, it will remove the 0th element. So we have delete method, we have remove method to remove the elements. Is it clear? This loop list we'll see it in tomorrow's session, and in tomorrow's session we'll start with the next data structure as well. So what we'll do now is I'll just create one folder in your drive. Right, new folder. ये folder का नाम suppose we can do it like verify data ds batch. So this is your folder, and यहाँ पे जो भी मटेरियल रहेगा आपका, I'll give it to you on your drive over here. तो अभी तक अपन ने क्या सीखा है? जो भी 1 2 3, right? I'll just download this. All right. तो ये day 1 का है. What we'll do is let's take this and let us paste it over here. Python day 1.
So day 1 में आपको you have this thing, right? Now you'll require this thing. Crop. देखो मैंने चैट पे आपके ये दिया है. What you can do is ये जो ड्राइव लिंक है आपका, you just bookmark this. आप bookmark कैसे करोगे? Select this thing as a favorite या फिर select this. So bookmark this thing so that आप हमेशा अगर आपको ड्राइव का एक्सेस चाहिए तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा वो. Is it clear, guys? Do you have any questions now? Any questions in this? जापू जी, बख्शिश, अभय, काजल, ध्रुव, गौतम, हरिमोहन, हर्ष, उज्जवल, पियांशु, प्रशांत एंड वैभव. Do you have any questions in this? आज के सेशन में any doubts? Why do you use Python for data science even when it is slow? It is not slow. किसने बोला आपको slow है? It's not slow. It's very easy. It's easy. उसका syntax जो अपन ने देखा था, right? To add two numbers. It's very easy, right? Syntax is easy. One of the reason is syntax is easy. Then we have multiple libraries in your Python. जो मैंने आपको होमवर्क दिया है. Why do we use Python? तो ऑलरेडी लाइब्रेरीज पैकेज जो है पाइथन में वो आप सिर्फ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हो. यू डू नॉट हैव टू डाउनलोड एनीथिंग. विल सी दिस क्वेश्चन आंसर इन टुमारो सेशन. Well, all right then, if you do not have any questions, we'll stop here for the day. Tomorrow we'll continue with the next part and we will discuss this point as well. Why do we use Python for data science? जो कि मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, right? We'll discuss this in tomorrow's session. So there are a number of reasons why do we go with the Python, because of the packages, because of the large community available on internet. You can take help of that. You'll get resolution to your error that you're getting in your codes, and it's very easy or user friendly language as compared to other programming languages like C, C++, Java, and syntax is also very less. It's very simple. That's the reason we go with the Python. We'll discuss this in tomorrow's session in more detailed fashion. Right. So all the best then. Thank you and happy learning. Bye.